can do. Often the roads will be rugged and the hills are insurmountable too. But always remember, the hills ahead will never be as steep as they seem. And with faith in your heart, start upward and climb till you reach your dream. For nothing in life that is worthy is ever too hard to achieve. And if you have the courage to try it, and if you have the faith to believe. For faith is a force that is greater than knowledge or power or skill, and many defeats turn into triumph if you trust in God's wisdom and way. For faith is a mover of mountains. There is nothing that God cannot do. So start your day with faith in your heart and climb to your dreams come true. Dear students, whether you have faith in yourself, a supreme power, or both, true belief can overcome life's setbacks and insurmountable obstacles. These beautiful lines were written by Helen Senior Rice, one of the most famous inspirational poets of all times. On this note, I, Dr. Pallavi Pathak, on behalf of School of Management Sciences, Varanasi, welcome you all to the inaugural session of the academic program for the BCom, MCom, BCom Honours and BA Honours Mass Communication courses. Wishing a glorious good morning to the honored guests, Director Sir, Registrar Sir, my worthy colleagues and dear students. I take immense pride in sharing that our institute will soon celebrate its 3 decades of excellence in the field of education. We are indeed quite fortunate to have 3 esteemed guests with us today to grace the occasion. Professor H.K. Singh, Head and Dean Faculty of Commerce, Varanasi University. Shri Dayasankar Mishra, President, Ramnagar Industry Association, Founder, Indian Inks Chemical Industries, Varanasi, and Chartered Accountant, Ms. Sudeshna Basu. Let us formally commence the inaugural session of this orientation program. May I request Professor H.K. Singh, Mr. Dayasankar Mishra, Ms. Sudeshna Basu, along with Director Professor P. Jha Sir and Professor R.K. Singh Sir, to come forward for ceremonial lamp lighting. I also request Registrar Mr. Sanjay Gupta and MCom Coordinator Mr. Atish Khatse, BCom Coordinator Dr. Chandrasekhar Singh, BCom Honours Coordinator Mr. Veer Pratap, and BA Honours Mass Comm Coordinator Dr. Krisham Tripathi to join the dignitaries. Registrar Sir. The lamp lit by these gentlemen shall act as a lighthouse. The lamp lit by these gentlemen shall act as a lighthouse for the new students and shall show them the path to move forward with courage and conviction. The tradition at School of Management Sciences, we offer a prayer to Devi Saraswati before the commencement of any academic event. In furtherance of the same, I now request all the dignitaries to garland the statue of Goddess Saraswati, who is considered in our culture an authority on academics and the arts.
new students begin their new quest for knowledge and excellence. Saraswati Namastubhyam Varade Kam Rupini Vidya Anand Karishyami Siddhir Bhavatu Te Sada. O Goddess Saraswati, my humble prostrations unto thee. She is capable of fulfilling all my wishes. I request you to bestow thy blessings on me before I start my studies. Jai Saraswati Ma. Esteemed guest, Professor H.K. Singh, Ms. Sudeshna Basu, along with Director Professor P.N. Shah sir and Professor R.K. Singh sir, to kindly grace the dais and have their respective seats. Professor H.K. Singh, Head and Dean, Faculty of Commerce, Varanasi, Varanasi. I further request Mr. Atish Khatse, Comm Program Coordinator, to welcome Shri Dayashankar Mishra Ji, President, Ramnagar Industrial Association, Founder, Indian Inks Chemical Industries, Varanasi, guest of honor of this orientation inaugural program. I further request Dr. Veerpratap, Coordinator, Comm Honors at SMS, to welcome guest of honor, CA Sudeshna Basu. Fortunate to have a highly qualified and erudite personality as the head of institution here at SMS. I now request the director and principal of the institute, Professor P.N. Shah, for the welcome note. सर्वमंगल मंगली शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके नारायण नमोस्तुते। सिद्धे साध्य सतामस्तु प्रसादार्थस्य भूजले जन्नवी फेन लेखेव जन्मूर्धनि शशिनः कमः। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरिनाशनम्। Honorable Chief Guest of the program, Professor H.K. Singh, Head and Dean, Faculty of Commerce, Varanasi University, venerated guests of honor, CA Sudeshna Basu, Chartered Accountant, Varanasi, and Sri Dayashankar Mishra, President, Ramnagar Industrial Association and founder, Indian Inks Chemical Industries, Varanasi.
my colleague and Head of Department of Commerce, Professor R.K. Singh, my friend and Registrar, Mr. Sanjay Gupta, Course Coordinator of Comm program, Mr. Atish Kharse, Course Coordinator of Comm Honors Program, Dr. B. Pratap, and Co-Coordinator, Dr. S. Gujarati, Course Coordinator of Comm Program, Dr. Chandrasekhar Singh, and Co-Coordinator, Dr. Santosh Kumar, and Course Coordinator of BA Honors Mass Communication, Dr. Ishan Tripathi. All my academic and administrative colleagues, and my very, very dear newly admitted students to these courses. Friends, this is indeed a very memorable, exuberant occasion and a landmark day in the history of SMS Varanasi and your own biographies as well. Because you have today started a new kind of academic journey which is going to be completed in the next 2-3 years, and this program is being flagged off by 3 eminent personalities of the area, both in academics and the pragmatic side of the business. I think with their blessings, when your program is flagged off, it becomes more certain that you will be receiving your targets very, very successfully. At this auspicious occasion, I take this opportunity to extend a tempestuous welcome to all of you. Dear students, today is a major inflection point in your career. A very important turn begins today. It is certainly the beginning of your great cerebral pursuit, whether it is Comm program or Comm Honors or B Honors Mass Communication program. You see, the programs are any, but the ultimate end is to complete that program successfully in order to imbibe all the various verticals embedded in the curricula of the program. Basically, friends, this orientation program is actually a kind of scholastic ritual. Here, you are subjected to a kind of collegiate socialization. All those structures, all those activities, all those systems with which you have to seriously interact over the next 2-3 years, your entire stay here, they will be made more and more proximal to you, because your understanding them in the deepest way is very, very important. Whether it is your institution, whether it is your curricula, or the persons who are responsible to deliver all these inputs to it, within the structure, within the labs, within the libraries, within the ambience, everything would be made available to you. You will be exposed to them during
days, 2 days. Friends, so far as your institution is concerned, SMS, it is almost now 3 decades old. The institution is now A-graded institution, and on that basis, it is having autonomy by the UGC. This is the only institution in this part of the country which has a credit of publishing 5 biannual research journals, and one of them is Scopus indexed. So it is a very important credit which your institution is having, and you have now become the part of this family. You are the newest stars in SMS firmament. I always welcome you. So far as the curricula are concerned, whether of your courses or of other courses, you know, the course curricula have undergone a kind of metamorphosis over the past several decades. You know, during 1986, we had got a new education policy during the regime of late Rajiv Gandhi. Since then, the curricula of any stream started, and it had to take care of the requirements, the needs of the various industrial revolutions. So up to 20th century, it took care of 3 earlier industrial revolutions. Number 1, 1784, number 2, 1870, and number 3, 1969. Now, with the emergence of Industrial Revolution number 4, a new kind of structure of the curricula was in the requirement, because Industrial Revolution 4 gave us a number of driving technologies like autonomous robots, augmented reality, additive manufacturing, artificial intelligence, big data and analytics, cyber security, horizontal and vertical integration, simulation, cloud, Internet of Things. So these driver technologies, they are so strong and relevant that their tentacles have invaded the territory of all the streams and disciplines. And your commerce and mass communication is not the insulated one. It has also come under its influence. That's why, with the emergence of the National Education Policy 2020, which came after 34 years of the 86 policy, these technologies have been accommodated, and accordingly, certain changes, certain modification was evident in the structure of the curriculum. That you will study here in order to remain current and updated, and I'm sure that the brilliant lot of the faculty members which we have here at SMS Varanasi, they will be very passionately guiding you, nurturing you in order to bring you to your manzil. I wish your journey a grand success and meaningful. May God bless you. Thank you. Thank you so much, Director Sir, for your very first opening remarks. Vision and goals make the impossible a lot more probable. Have you set clear goals for your future and made plans to accomplish them? See for yourself how this institution will help you achieve this. In this context, I now request Mr. Videsh Tripathi, Associate Professor, to present the preamble of SMS. Over to you, Videsh sir. Thank you so much, ma'am. Respected dignitaries on the dais, my dear faculty colleagues and dear students. I am here to discuss about the preamble of SMS Varanasi. It is important for you to understand
the principles, the ideology which have showed us path over the last 30 years, and we have maintained we do not lose direction, and our journey towards excellence is endless, and we do not stray from our path. So it is important first for you to understand what is preamble. We hear the word preamble mostly when we studied about the Constitution. Preamble, in simple words, in layman's language, is what we are, what we do, and how we do it. So it is important that you understand that these are the guiding principles and values which tells us what is our vision, what is our mission, how we are going to achieve our vision, what is the quality policy, how we will ensure that whatever we do is of utmost quality, and guiding values, whatever we do is ethical and value based. This is the vision statement of School of Management Sciences Varanasi. Since our inception, we follow this vision, and it is to become a constantly growing center of excellence, nurturing global-centric professional leadership based on ethical and moral attributes. So if you look at each and every word particularly, now constantly growing, because the position or the state we are in currently or presently, we want to grow from that position. We, from 1995, today we have become autonomous, and maybe we have a long way to go forward. So we are continuously growing, and this is important not only for us as an institute, as our students, you also have this aspiration to continuously grow. Talking about center of excellence. So center of excellence means that we focus on the aspect of creating excellence in every step that we take. We derive our inspiration from Kathopanishad. I would like to recite the verses. Om Sahnanavattu Sarnobhunattu Saviryam Karvavahe Tejasvi Navadhitamastu Ma Vid Vishavahe Om Shanti Shanti. I just come down to the verses. Just give me a minute. Okay, so this is our inspiration. Moving ahead with global-centric professional leadership. So, global-centric professional leadership. Today, as of now, we live in a global village. So, it is important that our students not only are capable of working in the indigenous environment, but they are capable of facing the challenges which are presented in front of them across the globe, anywhere in the world. And lastly, we place a special stress on ethical and moral attributes. If we do things wrongly, no matter how strong we position ourselves, it has no meaning. So every action, every aspect that we want to achieve has to be ethically and full of moral attributes. Mission statement. Now, mission statement, vision is where we see ourselves down the line. Mission is the roadmap, how we want to achieve it, what we want to do in order to ensure wherever we want to reach, we reach there in the right state. So vision statement spells out as to create excellent learning ambience. You understand, ambience is important. If we do not provide a proper ambience for you to study, it will be difficult for you to understand, learn and grow. So the words that I read just a minute back, it was the verse Om Sananavattu Sarnobhunattu Saviryam Karvavahe Tejasvi Navadhitamastu Ma Vid Vishavahe Om Shanti Shanti Shanti. In simple words, meaning, may Almighty protect us all, may He cause us to enjoy, may we acquire strength together, may our knowledge become brilliant, may we not hate each other. O Almighty, may there be peace everywhere.
Further innovation in teaching, research and consultancy. This is the era of technology, and so you understand that the means of teaching, the subjects that we are teaching, these are continuously evolving. So it is important for us as an institution to continuously innovate in our methods of teaching. We research in the newer directions and consultancy. We provide a sustainable or our support to the industry, to the corporate world as well, for the areas or towards the area in which we are doing our researches. Again, deriving our inspiration from Kathopishan, Om Sarvatra Sukhina Santu, Sarvatra Santu Niramaya, Sarvatra Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukhamapnuya, Om Shanti, Shanti, Shanti. Meaning, O Almighty, may everybody be happy, free from all ailments, and we see what is auspicious. May no one be subjected to miseries. O Almighty, may there be peace everywhere. Now, quality policy. As I told you, it is important to understand where we want to go. It is important to have a path, how we are going to reach there. But it is important to ensure that the quality is ensured in every activity, task, duties and responsibilities that we take up. Our quality policy states that imparting value-based education of highest standard relevant to contemporary world. So, value-based education of highest standard, new education policy is in place, and as of now, all our papers in our curriculum, in our various courses, enforce our value-based education system, and which is contemporary, which is relevant to the world as of now. Again, there is a verse which I would like to recite. It is a very common verse which you might have heard. Vidya dadati vinayam, vinayat yati patratam, patratvat dhanmapnoti, dhanat dharma tat sukham. In simple words, Vidya or education provides humbleness or vinamrata in Hindi. Or vinamrata ya humbleness se what comes is your patrata. You become deservable for the best quality of practice or what the world has to offer you in terms of success. And when you become deserving, जब पात्रता आती है तो आप उससे धन अर्जित कर पाते हैं. When you earn wealth, then when you use that wealth for the auspicious work or in simple word धर्मार्थ कार्य में जब आप उस wealth को इस्तेमाल करते हैं तो वास्तविकता में सुख की या संतोष की प्राप्ति होती है. और ये value based education we endorse of providing such value based education to our students. Moving down to the last part of our preamble, that is guiding values. Now, value is very important for you. As you understand, discipline is important. Your parents, your earlier teachers from the schools may have endorsed the significance of the discipline. Similarly, guiding values. You are the future professionals of this world. You are ambassadors of SMS Varanasi from today onwards. So, the value system that you imbibe, inculcate and develop in yourself becomes very important, because that into the outside world is the presence or resemblance of student of SMS Varanasi. In simple words, resemblance of SMS Varanasi. Our guiding values firstly is based on trust. So, faith and belief in your system, in your organization, in your faculty members, in your parents, it is very important, and that trust is mutual, which is shared among all of us, we as teachers, you as students. Sense of ownership. As I told you, you are our brand ambassadors. People will see you as students of SMS Varanasi. So it is important that you own this campus. When you wear the uniform of SMS Varanasi, you are seen as a student of SMS, so you bear that responsibility. So any action which may give a bad impression of the institute, you need to take care of that. Next, sense of contribution.
We are a part of a society, we are a part of this institution, we are a part of this country, and we are a part of this world. So in every aspect, in every facet of life, we have some contributions to make. And you need to understand, as an individual, you have your responsibilities, you have to own it, and you have to contribute in whatever way you can. Keeping your college clean, helping your friends, participating in the extracurricular activities, working hard, coming to college daily, whatever way you can contribute, it is required from you. So it is another guiding value. Each member of SMS family has to contribute. Innovation, as I told you, it is the technological era. Things are changing, everything is evolving. The subjects we are teaching, machine learning, artificial intelligence, these are the newest things that are being done. So we need to continuously innovate. So whatever we do, one of the most important guiding value is do not stick to one aspect. Innovate and redesign yourself from time to time as and when it is required. And lastly, which I already told you as a part of our quality policy, modesty and mutual respect. If you be modest and if you have mutual respect among yourselves with the various stakeholders of the institute, that is the most important value that you can inculcate as a part of SMS student. That is all for the preamble of SMS Varanasi. I welcome you all once again, and I hope that you imbibe these vision, mission, guiding values and principles in your lifestyle. Thank you everyone. Thank you, Sudeshna, for providing a sense of purpose to the students. Proceeding further, let me now invite Professor R.K. Singh, who heads the Department of Commerce at SMS. Sir will acquaint you about MCOM, BCom, BCom Honours and BA Honours Mass Comm program at SMS. Sir, kindly come to the podium. India, practicing since 1997. Ms. Sudeshna Basu possesses command over subjects like accounting, cost accountancy and financial management. She has held the position of chairperson of the Institute of Chartered Accountants of India and the Indo-American Chamber of Commerce, Varanasi, where she was the first lady, office bearer and chairperson in the Varanasi branch. NAM regularly organizes GST workshops and has attended and organized many regional and national workshops and seminars. Ms. Basu is the official career counselor with the Institute of Chartered Accountants of India and acts as a guest speaker at various institutes. She has been associated with Vyapar Mandal Varanasi, Women's Wing, as a secretary and a patron. Being an ardent animal lover, Ms. Sudeshna Basu is the member of Society for Prevention of Cruelty to Animals, Varanasi, and co-founder of the Animal Care Trust, a humanitarian society working towards a compassionate approach to all voiceless animals. Let me quickly invite Ms. Sudeshna Basu to the podium. Good morning, everyone. I think in the recent past, it's been my second visit to SMS Varanasi. I was a visitor earlier on in the initial days of SMS. Thank you, Pallavi ji, for those kind words. And it's good afternoon now. Professor Jha, Director of the Institute. Dr. Rajkumar Singh ji, Professor, he's always been kind enough to invite me so that I can interact with the students of the orientation program. Distinguished guests on the dais, Sir H.K. Singh ji and D.S. Mishra ji, faculty of SMS College Varanasi, dear students and everyone else gathered here. It's an absolute honor and privilege to stand before you for this important event in your prestigious institution. As I look around, I feel happy and proud
to see your happy faces and welcoming demeanor for entering this institution with so many dreams that you may have dreamt of. When I address today to you, I have decided to focus on the different dimensions that your institution promises to give to you. I'd also like to give you some words of advice so that those things remain in your minds when you grow up beyond this. This is a changing landscape of commerce and management. That's the first thing I want to deal with you. We live in a time of extraordinary change. Do you all agree with me? Students? The fields of commerce and management were earlier built around brick and mortar businesses, traditional banking systems, and linear supply chains, right? I want some interaction also if you need anything to ask. This is now evolved into dynamic, tech-driven ecosystems that are global in their reach and rapid in their transformation. When Professor Singh told you about startups, the success is only because of the global outreach. You are not limited to one place only. So your market becomes bigger. Today we are in an era where industries are being disrupted by digital technologies from artificial intelligence to blockchains. You have to be very careful about that. You have outages. Like all the airports, the flights could not take over when Microsoft suffered an outage. You know that was in the recent past. So data analytics, global finance and digital marketing have become core to the success of businesses worldwide. For all of you studying management and commerce here, this means you are entering a world that demands adaptability, creativity and the ability to lead in times of uncertainty. Second thing that I would like to deal with you is importance of continuous learning. Your learning does not start and end with a course, a degree or a beginning at 9 a.m. and ends at 9 p.m. The education you are receiving here is in a world where technology and business practices evolve faster than ever. What is cutting edge today may be obsolete tomorrow. We had mobile handsets in a short period of I think 8 to 10 years. Remember how we started? It was a pager, then a single set system, and today you have Androids. Correct? So what is of prime importance today changes tomorrow. You have to adapt. And that is where your opportunities arise. Never stop learning. That's my message to you. Equip yourself not just with knowledge but with the skills and mindset to continuously seek new ideas, adapt to change and solve complex problems. Your time in college will provide you with the tools, resources and mentorship to build a strong foundation. But the real test will be how you apply that knowledge in the real world. So there are 2-3 words I'll share with you. Be curious, ask questions. You all have questions, lot of queries that come in your mind. Be bold, don't hesitate to take help from your teachers. You have a very good faculty in this college. Never settle for mediocrity. Okay, ऐसा नहीं है कि मैं हो जाएगा. No, don't do it. The leaders of tomorrow are those who are challenging the status quo and constantly pushing themselves out of their comfort zones. Correct? Third, I am dealing with topics that I think Professor Singh dealt with you very nicely. Leadership and ethics in business. One of the most important lessons that I learned and I am sharing with you is the value of ethical leadership. In today's fast-paced world, success can be fleeting but integrity lasts forever. Whether you want to be a manager, entrepreneur, financial analyst or any other role in commerce and management,
Your reputation will be built on the values that you uphold. Ethical leadership is not just about following the rules. It is also about making decisions that not only benefit your organization but also have a positive impact on society. Good leaders care about the people they work with, the communities they serve, and the world they live in. As I was going through your SMS newsletter, I found a lot of social incentives and awareness programs like plantation, going out, Beti Bachao, Beti Padhao, other organizations and activities that college has done with you. In the past, since you are new students, you will be doing this. Profit and purpose can and should go hand in hand. I also take the opportunity to invite the management and inform that in this era, social internship is of prime importance. I invite you through the management to visit and learn from a small venture that we have set up, as Pallavi ji informed you, the Animal Care Trust. It's at Harawa near Kamalpur, where we endeavor to take care of strays, mostly sick, paralyzed or abandoned animals. We already have at universities like UPES, Dehradun, and Christ College, Bangalore. Students from there have interned with us for 2 months, and I extend that invite to the management of the college for interested students as well. The role of innovation and entrepreneurship, that's the fourth pillar of your education. As students of commerce and management, you are not just future employees, you are potential entrepreneurs and innovators. The business world today is driven by startups and innovations, and what better than the fact that I also was aware that 100% of the startups here have consultation post-starting. That is very important. Whether you work within an established organization or start your own, I encourage you to think like an entrepreneur. Find new solutions to old problems, take calculated risks, and embrace the spirit of innovation. If you find solar energy today is started with a startup, and today see rainwater harvesting. These are two business models I'm telling you which are continuously innovating and new things coming to the fore. Remember, some of the world's largest and most successful companies started from a single idea and a lot of hard work. With determination, creativity and a passion for problem solving, you have the potential to contribute to the world in ways you may not have imagined. As Warren Buffett said, and I quote, in the business world, the rear view mirror is always much cleaner than the windshield. To the students here, as I conclude, the future is yours. We are the present, but you are the future. You are standing on the brink of an exciting journey, one that is filled with opportunities, challenges and growth. Equip yourselves with knowledge, embrace the values of leadership and ethics, and never stop being curious. I am confident that this institution will prepare you well for the next steps in your career and life. As you go forward, remember that the world needs visionary leaders, compassionate managers, and innovative entrepreneurs who can navigate the complexities of this much diverse world. And thank you once again, SMS, for inviting me here. I'll just end with one line. Dhairyam Sarvatha Sadhanam, meaning patience and courage are the keys to achieving. Thank you. Thank you so much, ma'am, for gracing the occasions and guiding the students. It has been rightly said, with a new day comes new strength and new thoughts. It's a sheer privilege to have Mr. Dayashankar Mishra as a distinguished guest of honor of this inaugural session. Starting the business in 1995 as a manufacturer of printing inks by the name of Indian Inks, today it has made marked by comprised of 4 units. Indian Inks and Chemicals Industries Varanasi, another in Rudrapur, Uttarakhand, then ADH Inks,
Private Limited, Jabalpur MP, and ADH Food Processing Industries, Varanasi. Mr. D.S. Mishra holds the position of President Ramnagar Industrial Association, Advisory Committee member of Sampurnanand Sanskrit University and Railway Deen Dayal Nagar Division, Export-Import Committee member of Chandoli, Namami Gange Committee member of Chandoli, Vice President of Bharat Lok Shiksha Parishad Varanasi, and GRC members, GSC Council. Now, without taking much time, I request Mr. Dayashankar Mishra to address the gathering in this inaugural session. Thanks, Madam. First, I request management to allow in Hindi, it is permissible for me, because we conveyed in our mother language much better than English. Thanks, sir. हम पहले तो इस संस्थान को नमन करते हैं। यह तो एक शिक्षा की एक पावन भूमि है और मुझे लग रहा है कि जो एक अध्यात्म और शिक्षा, संस्कृति, कल्चर का जो समन्वय हमने देखा है, उसके लिए संस्थान, मैनेजमेंट, प्रोफेसर, टीचर सभी को हृदय की गहराइयों से नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आपने इस जगह मुझे बुला करके एक मौका दिया इंटरेक्शन के लिए, मुझे लग रहा कि ये हमारे लिए भी एक अचीवमेंट है। हम प्रोफेसर पीएन झा साहब का आभार व्यक्त करते हैं। सर से जब बात होती है, इतना ज्यादा आप इस संस्थान के प्रति, बच्चों के प्रति, बच्चों को क्या बना दें, इसके प्रति जो सर के अंदर में कूट के भरा है, मुझे जैसा हमारे जैसे भी हम लोग विद्यार्थी हैं एक तरह से, तो ये भी बहुत सीखने की चीज है कि किसी संस्थान के प्रति आपका समर्पण किस क्वालिटी का है। प्रोफेसर राजकुमार साहब से लगातार बात होती है, आउट ऑफ डेटा के भी हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ कैसे नए नए कोर्स हो, कैसे डेवलपमेंट हो, ये संस्था भारत के बेस्ट इंस्टीट्यूट में संस्थान में कैसे आए, हमारे बच्चे कैसे संस्थान का नाम करें, इसके पीछे मुझे लग रहा है कि शायद आप यहाँ आके के संस्थान में 8 घंटे 10 घंटे रहते होंगे, लेकिन सोते जागते, जिसको देसी भाषा में कहा जाता है कि सोते जागते संस्थान की चिंता करना, ऐसे प्रोफेसर राजेश सिंह साहब को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बच्चे यहाँ हैं, हमें लग रहा कि आप ये जो इंस्ट्रक्शन का मौका दिया है, हम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इंडस्ट्री से आते हैं, और आप लोग भावी इंडस्ट्रिस्ट बनेंगे। आपको जॉब सर्जन की जगह जॉब क्रिएटर बनना है। पहले तो मन में धारणा निकाल दीजिए कि जब यहाँ से निकलेंगे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, उससे आपका परिवार का और बाकी सामंजस्य भरण पोषण करके सक्षम होंगे। क्या
लेकिन उस बालक के अंदर उत्कंठा थी कि हमें सीखना है, तो उसने क्या किया, मिट्टी की मूर्ति बनाई और मिट्टी की मूर्ति बना करके उसके सामने अभ्यास करना शुरू किया। अभ्यास किया, सीख लिया। बाद में कुछ समय बाद जब गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को कुछ अभ्यास करा रहे थे, जंगल से जा रहे थे, उनके सामने कुत्ता है। वो कुत्ते के मुंह में पूरा बाण भरा हुआ था, धनुष के जो बाण होते भरे हुए थे, लेकिन एक बूंद का खून नहीं गिर रहा था। तो गुरु द्रोणाचार्य को आश्चर्य हुआ कि ऐसी कौन सी धनुर्धर है, ऐसा कौन सा ज्ञानी है जिसने ऐसा बाण मारा कि चोट भी नहीं लगा, उसका मुंह भी बंद है। तो वो जो है कुत्ते के साथ में आगे गए, तो वहां देखे एक बच्चा प्रयास कर रहा था। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने वो समझ गए कि कोई इसके पास अभ्यास तो है, तो उन्होंने बोला कि कुत्ते को आपने कैसे किया, बच्चे से पूछा। तो उसने बताया कि मैं अभ्यास कर रहा था, बार बार टीचर कर रहा था, भूख रहा था, आवाज कर रहा था, तो मैं टीचर बड़ा था, किसी नाते इसका मुंह मैंने बंद कर दिया। तो बोले कि तुम्हारा गुरु कौन है, जो बताया कि गुरु द्रोणाचार्य। बोले हमने तुम्हें शिक्षा नहीं दी। तो ले गया, वो बच्चे ने दिखाया, तो मिट्टी की मूर्ति बनाकर प्रतीक बना करके और उससे ज्ञान प्राप्त किया। तो बाद में कथा को बताया, गुरु द्रोणाचार्य ने दक्षिणा में उठा मान लिया। संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनने के लिए प्रतीक का इस्तेमाल किया, लेकिन समर्पण कैसा था, उत्कृष्ट क्वालिटी का समर्पण था। तो जब आप शिक्षा में आए हैं, अध्ययन के लिए आए हैं, तो आपको उत्कृष्ट क्वालिटी रखनी पड़ेगी। आपको कहीं आपके अनुसार से नहीं होना चाहिए, कोई और दिशा नहीं होनी चाहिए। आपके माता पिता के सपने होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, उनके सपने होंगे, परिवार के होंगे, कुछ लोग परिवार व्यापारिक परिवार होगा, कुछ सर्विसदार होगा, सबके सपने पूरा करने होंगे, कहीं से जुड़े होंगे। तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहाँ करना होगा जब आप शिक्षा में हैं। आपके पास शिक्षा के लिए काम कितना है, 4 साल 5 साल, इससे ज्यादा तो नहीं है। फिर आपको फिर जीवन के संघर्षों में उतरना पड़ेगा। आप 4 साल संघर्ष करके 40 साल आनंद कर सकते हैं, और 4 साल आनंद उठा के 40 साल संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ 4 साल शिक्षा में अगर आपने अपने आप को, शरीर को घिसा, दिमाग को घिसा, तो जिस क्षेत्र में रहेंगे सफलता आपके कदम छूने के 40 साल आपको मौका मिलेगा। एक उदाहरण दूं, जब गंगोत्री से पर्वत टूटते हैं, बरसात में पानी होता, पर्वत पत्थर टूटते हैं और चलते हुए वहां पानी के साथ में, मिट्टी के साथ में गिरते हुए चलते हैं, कुछ पत्थर किनारे हो जाते हैं। वो क्या होते हैं बाद में, वो पत्थर बाद को उठा के लाए जाते हैं और उसकी गिट्टी तोड़ी जाती है, सड़क बनाई जाती है। कुछ घिसते हुए आगे बढ़ते हैं, कुछ उसका शेप चेंज हो जाता है, जिससे मार्बल ग्रेनाइट ये सब बनते हैं, करते हैं, वो जाकर के घर और मंदिर बनाने के काम में आते हैं। उसी में से कुछ पत्थर होते हैं जो घिसते घिसते गंगा सागर तक चले जाते हैं और उसी में से शालिग्राम निकलते हैं। उत्पत्ति एक ही जगह है। वो पत्थर जो गंगोत्री से गंगा सागर तक घिसने की अपनी ले लिया, तपस्या घिसते रहा, वो शालिग्राम बना, वो पूजनीय हुआ, उसको जाके अमर चढ़ाते हैं, और जो किनारे हो गए सड़क बनाने के काम में आया, किसने आधी अधूरी में ढक दिया, वो जाकर के दीवार बनाने के काम में आया। जीवन में आपको शालिग्राम बनने का संकल्प लेना होगा। ये जो शिक्षक हैं, पता नहीं कितने भाग्य से मिले हैं, फिर ये इनसे बाद में इंफेक्शन नहीं था। हम तो आगे कुछ नहीं कुछ चले जाएंगे, लेकिन 8 घंटे 6 घंटे क्लास में बैठने का हमें मौका नहीं मिल सकता। ये अब हमारे मौके हमारे चले गए, आपके पास इसका सदुपयोग करें। दूसरा एक विषय और आपको बताना चाहता हूँ, जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको 4 चीजों की आवश्यकता होती है, लक, लेबर, चांस, मनी। मतलब एक भाग्य हम लोग हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमें बताया गया कि भाग्य में अच्छा होगा तो करेंगे, और निश्चित रूप से भाग्य कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक तो भाग्य लक होना चाहिए आपका अच्छा,
लेबर उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है, भाग के साथ में पूरक है एक दूसरे का। तो कर्म आप अच्छे करेंगे, परिश्रम करेंगे, लेबर चांद जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए मौका होना चाहिए। कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई पार्ट बना रहे हैं, उसकी बिक्री होनी चाहिए, उसकी जरूरत होनी चाहिए। और चौथा है मनी, आपको व्यापार करना तो मनी की जरूरत है। तो ये चारों चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का महत्व है तो कर्म है। आपको कर्मयोगी बनना है। कर्मयोगी के पीछे भाग भी चला जाता है। आप कई लोगों ने जानते होंगे हाथ की रेखाएं भी बदलती हैं। ये हाथ की रेखाएं जो होती है ना, ये जो है इसमें परिवर्तन होता है उम्र के साथ में, तो कर्म से भाग्य भी बदलता है। आपके अंदर भी इतना क्षमता टैलेंट होना चाहिए कि अपने भाग्य को, अपने परिवार को बदल सके। बचपन में कविता आपने पढ़ी होगी, उठे हो लाल है अपने आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। कभी अंतिम व्यक्ति जो कहता, जो मैं आप लोगों से संदेश देना चाहता हूँ, अंतिम व्यक्ति ने कभी क्या करा, उठो ऐसा सुंदर समय में खो, मेरे प्यारे अब मत सो। इस कविता के अंतिम व्यक्ति सारा संदेश क्या देती है, जीवन के सारे आदर्श दे देती, सारे ज्ञान दे देती है कि ऐसा सुंदर समय में खो, मेरे प्यारे अब मत सो। तो ये होना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां परेशानियां भी तमाम है, और ऐसा नहीं है कि तमाम दूसरे, और कठिनाई में भी, अभाव में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको आपको चुनौती के रूप में लेकर के, उसको आपको पॉजिटिव में लेकर के, वो आपके वो सकारात्मक में लेना है। जिसे कहा जाता है ना, आवश्यकता या आविष्कार की जरूरी है। अभाव में पले बढ़े ही आगे बढ़ते हैं। राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े रजवाड़े बिके, रियासतें बिक गई। क्यों बिक गए? कि संघर्षशीलता खत्म हो गई। उनकी संघर्षशीलता जब खत्म हो गई तो रजवाड़े भी बिक जाएंगे। तो संघर्ष अगर अभाव है, परेशानी है, तो उसको आप अवसर में बदलिए। एक तो ये था, आज जो व्यापार करने के लिए मैं, सरकार जो है आज इतनी अच्छी पॉलिसी बनाई, इतना ज्यादा आपको दिए हैं, सुविधाएं दी हैं। अभी आज हमने पेपर में पढ़ा कि सरकार आपको निःशुल्क मतलब ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विजन करने जा रही है। आपको सरकार ने 5 लाख दिया, 50 लाख दिया, वो 5 साल तक कोई ब्याज नहीं लगी। जिस कैटेगरी को आप बिलोंग करेंगे उस कैटेगरी में सब्सिडी मिलेगी। जो उत्पाद आपको उस पर निर्भर करता है, कहीं 20% है, कहीं 30%, कहीं 35%, अधिकतम 40% है। तो वो सब्सिडी तो माइनस हो जाएगी, लौटाने के टाइम आपको उतना कम देना पड़ेगा, लेकिन ब्याज नहीं लगेगा। दूसरा, स्टार्टअप के लिए सरकार ने पूरे टैक्सेस को रिजन कर दिया है आपको। दूसरा, गवर्नमेंट के जो नाम पूरे करने होते हैं 1000 दिन लगभग 3 साल तक के लिए, उसके लिए भी आपको कर दिया है कि आपको पोल्यूशन का, फायर का, तमाम गवर्नमेंट के और फॉर्मेलिटी पूरा करने पड़ते कि इंडस्ट्री लगाने के लिए सीपी लगाना और लगाना, इससे 1000 दिन के लिए भी आपको गवर्नमेंट ने दिया। तो इंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें लग रहा है इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा। और क्या लोग बहुत चिंतित रहते हैं, चाहते हैं कि बच्चे हमारे कुछ करें। आप पढ़ाई में अभी तो पूरा समर्पण यहाँ करिए। आप जब जाते हैं इंडस्ट्री में, जाते हैं कुछ काम करने के लिए जाते हैं, ध्येय रखिए कि सरकार जो योजनाएं दे रही है, कर रही है। आप कई बार लगता है कि हम क्या बनाए, क्या करें। आज जो भारत का निर्यात है 778 मिलियन डॉलर है, पिछले साल का आंकड़ा है। और पूरे वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट होता है उसमें हमारी हिस्सेदारी कितनी है? 2% से कम है। पूरे वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में हमारी हिस्सेदारी मात्र 2% है, और जो निर्यात है ये 778 मिलियन डॉलर है। अब आप सोचिए कि आपके पास संभावना कितनी है। 2% को 10% किया जा सकता है। 778 करोड़ से हम कितने हो जाएंगे? 3800 मिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर 5 गुना बढ़ाएं। अब
उसमें कितना अपार संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। विश्व का बाजार आज खुल चुका है, इतनी बड़ी संभावनाएं हैं। अभी राजकुमार सिंह साहब कह रहे थे कि हमारे पास 60% हमारी आबादी 40 वर्ष से कम आयु की है। पूरे यूरोप की जितनी आबादी उतना तो हमारे युवा है। 18 साल से 40 साल की जो हमारे पास आबादी है पूरे यूरोप के बराबर है। और क्या चाहिए आपको? मार्केट हमने बताया कितना बड़ा है, जहां 2% पूरे वर्ल्ड के जो एक्सपोर्ट उसमें 2% हिस्सेदारी है। अरे आप करिए ना, 50 गुना काम करिए, इतनी संभावना है। और दूसरा, हमारे पास मानव संसाधन कितना है? यूरोप की आबादी के बराबर मानव संसाधन। अब क्या चाहिए? इसके बाद क्या चाहिए? इंस्टीट्यूट आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास के इंस्टीट्यूट है। हो क्या रहा है कि क्षमता का उपयोग इंस्टीट्यूट भी कई बार नहीं पता। अभी एजुकेशन का बताएंगे, इंस्टीट्यूट का बड़ा हमारे पास संस्थान है, वो संस्थान भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? एक तो क्या होता है कि बच्चे भी जो है वो इंटरेस्ट कम लेते हैं। जैसे अभी सर ने बोला कि इंटरेक्शन होना चाहिए, मैडम ने भी बात बोला कि आपका इंटरेक्शन होना चाहिए। अभी कॉलेज के बाद में कितने बच्चे फोन करके अपने प्रोफेसर से पूछते अपनी समस्या, 1-2% भी नहीं पूछते। वो तो छोटी क्लास में उठ के खड़ा होकर नहीं पूछते क्या हो रहा, कहाँ जा रहे हैं। मतलब क्या है कि हमारी थिंकिंग ही घट गई है, हमारे सोचने की क्षमता ही घट गई। हम इन्वेंशन नई चीजों को दिमाग में लाए नहीं पा रहे हैं। पूछेंगे कैसे? जब सोचेंगे तो पूछेंगे, जब सोचेंगे तो समस्याएं आएंगे तो हम पूछेंगे। तो इन चीजों से भी आपको उबरना होगा। और मुझे 15 मिनट का टाइम दिया गया था। आज इन्वेंशन, अभी आज मैंने खबर पढ़ी कि जो वहाँ पर है अमेरिका में जो आपका स्पेस वाला क्या हो, एलन मस्क है, जो ये आपका ट्विटर का वो है, उसने एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया कि जो आंख के अंधे उनको दिखाई देगा। वो आगे मैंने पढ़ी खबर। अब देखिए कितना बड़ा इन्वेंशन है। आज वो प्रोडक्ट चाहे कितने पैसे में बिके बिक जाए, वो 1000-2000 का होगा, 10,000 का होगा, कुछ भी हो, लेकिन वो 100 गुना प्रॉफिट में बेचेगा, बिक जाएगा कि नहीं बिक जाए। ऐसा इन्वेंशन हम लोग कहाँ कर रहे हैं? ये हमारे युवाओं में टैलेंट है, होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम भी आपका ध्येय वाक्य सुने तो विनम्रता भी आभूषण है, उसको आभूषण बनाइए। और अध्ययनशील बनने के साथ में आपको होना चाहिए, इगरनेस भी होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए चीजों को जानने के लिए। संस्थान में प्रोफेसर लोग हैं, तो क्या पत्थर को पारस बनाने के लिए तो हमें लगे भी हैं। और हमें आज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर किसी बच्चे को कहीं कुछ लगता होगा, कुछ करना चाहता है, तो यहाँ जो गवर्नमेंट के संस्थान है, जिला उद्योग केंद्र है और एमएसएमई है, उनके अलावा जो हमारे जैसे लोग कहीं समाज के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, आप उनकी भी मदद कीजिए। निसंकोच आप पूछिए। अगर आपके मन में कुछ आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो आप करिए। हमारे जैसे का उपयोग कर सकते हैं इन चीजों के लिए, जहाँ पर धन और किसी की आवश्यकता नहीं, कि ध्यान की आवश्यकता होती है, तो ऐसे जगह से भी आपको मदद मिल जाएगी। आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर जब परिवार होगा, सोसाइटी होगी, तो अपने आप आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा। और हमें ये जो युवा है, देश के भविष्य है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये चाहेंगे कि पढ़ाई के बाद में आप एंटरप्रेन्योरशिप अपने अंदर अभी से लावें। और मुझे लग रहा कि सच्ची देश सेवा यही होगी कि जॉब सर्चर के जगह आप जॉब क्रिएटर बने। एक बार पुनः हम झा साहब का, सुदेशना मैडम, कई बार अलग अलग बैठकों में मुलाकात होती है और सीए के रूप में मैडम होना की बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त करी है, लेकिन सामाजिक सरोकारों में भी आपकी रुचि है। और अभी हम लोग सुनेंगे प्रोफेसर सिंह साहब को, राजकुमार सिंह साहब का भी पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि मौका दिए जरूर यहाँ आने का, लेकिन
बच्चों से वही एक बार पुनः अंतिम बात करना चाहता हूँ कि अब शालिग्राम बनने का समय आ गया है। अब शालिग्राम बन के दिखा मैं इसी शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय उद्योग, जय भारत। Sir has just shared his success mantra with you all. So make best use of your luck, labor, chance and money. Let today be the start of something new. Don't waste the moments of your life. Now is the time to get intentional about achieving success without multiplying regrets. Moving ahead, the chief guest of this inaugural session, Professor H.K. Singh, is the head and dean of the Faculty of Commerce at Varanasi University, Varanasi. He has been the founder vice chancellor at Maharishi University of Information Technology, Lucknow. Sir possesses a vast teaching and research experience of more than 36 years at both BHU and Allahabad University, Mumbai, in the disciplines of accounting and finance. He has supervised more than 24 doctoral candidates. A gold medalist of BCom and Comm from Allahabad University, Professor Singh has written 19 popular academic books and has around 47 research papers to his credit. His 3 books have been awarded as best textbooks by AICTE. Professor Singh has been the executive member of ICA for 2 terms and has also been the treasurer of the Indian Commerce Association and managing editor of the Indian Journal of Commerce. He has been a member of various academic bodies and expert of selection committees of more than 24 universities. Professor H.K. Singh is considered to be a very proficient academician, administrator and motivational speaker. Sir has delivered more than 500 lectures throughout the country at different renowned institutions. He has a keen interest in social welfare and is engaged with different NGOs. His association with SMS is truly old and gold, as Sir is the honored member of our governing body, Academic Council and Board of Studies. Over to you, sir. थैंक यू डॉक्टर पल्लवी। कुछ लगता है प्रेम बस मेरे बारे में ज्यादा बता दिया है, तो बड़ा अच्छा बोलने नहीं जा रहा। अगर अच्छा ना हो तो खुश रहे। प्रोफेसर पी.एन. झा, डायरेक्टर ऑफ SMS, प्रोफेसर आर.के. सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉमर्स SMS, मिस्टर वीरेश त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर, the alumnus of Varanasi University, Sri Sudeshna Basu, Sri Daya Sankar Misra ji, Mr. Sanjay Gupta, the registrar of SMS, other faculty members and dear students. 2020 year was such a year for what I was talking for the last 30 years. We were expecting the vision of Abul Kalam that in that year India will become the developed nation, super economic power. From 86 I started my teaching career, and from those years I was thinking that we will be in the category of developed nation. Otherwise the nomenclature was underdeveloped, backward, third world country. और नाराज मत होना, मैं इस तरह की कैटेगरी को भी एक्सेप्ट नहीं करता। Someone is saying HKC underdeveloped, backward, developing, bimaru. It's not good. From my point of view, category is only 2. Whether you are talking about micro level or macro level. व्यक्ति से लेकर के राष्ट्र तक की बात करता हूँ। The categories are only 2, mismanaged and well managed. If you are having firm belief and you are fully committed for effective management, well management, you are in the category of super economic power, developed nation, BRICS, like that. Otherwise, you are in the Bimaru category. Therefore, for our country or for any individual, the
us put emphasis on professionalism into management. If we are working hard 24/7, we are in the category of developed nation, developed state, developed university, developed individual. Professor Jha was talking about NEP. In 86, the name was New Education Policy. In this year 2020, the nomenclature was given National Education Policy. In that context, I am going to talk about the word acronym known as AREA. AREA. मैं इन्हीं चारों से 10-15 मिनट आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ. Number 1, A is academic. Be careful about it. You are a student of BCom or MCom or mass communication or that. We are in the category of academicians. For academicians, only one production branch is there. That is my brain, mind. We have no any other unit. We have to generate ideas here. But for the success, club the production branch with the marketing. हमारे आपके पास प्रोडक्शन की एक ही है, दिमाग है, ईश्वर ने दिया है, लेकिन सफलता के लिए क्लब द प्रोडक्शन विद द मार्केटिंग. एंड फॉर मार्केटिंग थिंक अबाउट सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट. 2 सॉफ्ट स्किल्स, रिटेन एज वेल एज ओरल. जिसके पास अच्छे से बोलने आ गया, अच्छे से लिखने आ गया, उसके सफलता की संभावनाएं बढ़ गई. For a teacher, there is essential need to be good orator, good writer. For a student, in the examination, critical examination, written part. In the interview, oral part. And therefore, as per NEP, we are putting emphasis on soft skill development. You are here for 3-4 years. Be careful about it. For academic accommodation, clever person, generating the idea with soft skill development. मैं एक तो छोटा एग्जाम्पल आपको देता हूँ. आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती है, वो प्रोडक्शन का मामला है. शी इज गुड प्रोड्यूसर, लेकिन उससे काम नहीं बनता है. हर आदमी यही करता है, मम्मी जैसा खाना कोई नहीं खाता. उनके हाथ में जादू है, तो उनको पता है मार्केटिंग का. उनको ये मालूम है इनके वाले में नमक, इनके वाले में तेल, इनके वाले में मसाले, और मेरे जैसे बुढ़े लोगों के लिए सादा खाना. इस मार्केटिंग किस तरह से हम अपनी बात को रखेंगे कि वो इफेक्टिवली दूसरे तक पहुंच जाए. मम्मी को पता है कि दूसरे पार्ट को कैसे हम संतुष्ट करते हैं. कपड़ा होना प्रोडक्शन का मसला है, कपड़ा पहनने का हुनर होना मार्केटिंग का मसला है. नाराज तो होना, नई पीढ़ी के लोग अल्ट्रा मॉडर्न होने में जाते हैं मातम में भी और लाल कपड़ा ही पहनते हैं. कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन पीस हो रहा है. ये निश्चित विवेक होना चाहिए हमें कब कहां क्या पहनना है, कब कहां कैसे बोलना है. अगर ये विवेक नहीं है तो सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी. Try to understand the marketing, the soft skill development. Friends, in academic world there is serious crisis. The number of universities in our country is more than 1000. 1000 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं. केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज. But on the other hand, the paradox. No one Indian university is in the best 100 universities of the globe. 1000 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं और उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो ग्लोबल रैंकिंग में 100 में आता. The paradox is very much alarming. You have to bother about it. But friends, please permit me. As per NEP, I am suggesting you people try to understand this is simply educational ranking. India needs value-based educational ranking. Not only educational ranking, value-based educational. केवल शिक्षा देना मेरा काम नहीं है. चरित्र आधारित शिक्षा होनी चाहिए, मूल्य आधारित शिक्षा, नैतिकता आधारित शिक्षा. नाराज मत होना. अगर ये शुरू हो जाए तो शुरू होगा तो हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय दुनिया में टॉप करेगा. We are not only bothering about education,
traditions, and that's why our students are so serious. नाराज मत होना, दिल्ली का एक विश्वविद्यालय बड़ा अच्छा काम, लेकिन वहां नारा लगता है भारत माता के टुकड़े हो। अगर इस तरह की शिक्षा कहीं दी जाती है तो वही इस तरह की शिक्षा पर आलोचना। अगर हमारे विद्यार्थी में इस तरह के भाव आ जाते हैं तो कहीं का भी हो, कितना भी तेज बच्चा को हो, अगर उसमें चरित्र नहीं आया, नैतिकता नहीं आई, राष्ट्रीयता नहीं आया, तो वह शिक्षा किसी काम। We have to think about this as per any holistic growth. केवल वन साइडेड लॉपसाइड नहीं, होलिस्टिक ग्रोथ, समग्र विकास, विद्यार्थी के हर डायमेंशन का ग्रोथ करना। तो मैंने पहला वर्ड आपको बताया, ए एकेडमिक, नंबर 2 आर रिसर्च। You are aware after 4 years the degree will be given BCom honors with research. Now undergraduate candidate will be allowed to pursue a doctoral program. ये पहली बार व्यवस्था की जा रही है कि बीकॉम का बच्चा भी अगर अच्छे नंबर लाएगा तो उसको डिग्री मिलेगी बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च, एंड नॉट ओनली दैट, he or she will be permitted to pursue the doctoral program. इतना बड़ा मौका दिया जा रहा है। Therefore friends, I am suggesting you people try to be good researchers. You are undergraduate student, try to inculcate the value of research, and for becoming effective researcher, think about the confluence of 3 specific attributes. अगर हमको आपको अच्छा रिसर्चर बनना है तो 3 गुणवत्ता आनी चाहिए। नंबर 1, नॉलेज ऑफ आरएफ, रिसर्च मेथोडोलॉजी। हम बीकॉम के बच्चे को सिखाएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी। नंबर 2, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई एम नॉट सेइंग कंप्यूटर की जरूरत, कंप्यूटर इज फोकसिंग ऑन द हार्डवेयर पार्ट, and IT talking about software part, application part. Gone are the days of vertical subjects. थियरी का जमाना गुजर चुका है, इसीलिए इकोनॉमिक्स कमजोर पड़ा, because economics became quite critical, abstract, and therefore we started applied economics, and applied economics is known as commerce. But the span of time, commerce also became critical. मेरे नए मित्रों नाराज न होना, एक नोट्स बनता है 40 साल चलता है। Is it the proper for the teacher to teach from the same notes for coming 40 years? Every year we have to update the things. Otherwise, I will be perfectly obsolete. Somehow, commerce also was becoming, up to major extent, obsolete. Therefore, we started applied commerce, and applied commerce was known as money. This is the shift from economics to commerce, commerce to management. But after 1991 up to 2020, same happened in management, and that's why now we have started applied management, not only pure management, applied management. So these are the 4 disciplines: economics to commerce, commerce to management, and management to applied. And the comprehensive term is business education, clubbing economics, commerce, management and applied management. Don't always think about division of certain disciplines. In any field there is proper focus on the interdisciplinary approach. I am talking about research caliber. Number 1, you have to think about the research methodology. Number 2, IT, and number 3, QT, quantitative data. For becoming best researcher of the world, when you inculcate these 3 values, RM, QT and IT. I am providing one very bad data. As per the version of ex-HRD minister, nowadays it is the name of the education minister. पहले कहते थे HRD minister, Professor Singh was. He was working with us at University of Allahabad, then he became HRD minister. Indian researchers are acceptable 0.1% at the global level. 100 में 1 नहीं, 1000 में। नारायण नोला लिखते हैं आर्टिकल और बताते हैं रिसर्च के। अब तो नई पीढ़ी बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको आइडिया है साइटेशन इंडेक्स, एपीडीसी, केयर, थॉमसन, तमाम बातें अब आने लगी हैं, स्कोपस की बात होने लगी है। हम जाएंगे, हमारे विद्यार्थी अभी से सीखेंगे रिसर्च के लिए। जो शब्द मैंने आपको दिया था, एरिया, एकेडमिक, रिसर्च, और जो 3rd पॉइंट ई, extension activities.
Although I am getting bread and butter from Varanasi University, but I am not only from Varanasi University. Try to understand. I am a global professor. हम पूरी दुनिया के लिए बने हैं, आप भी पूरी दुनिया के लिए बने हैं। कम से कम कंप्यूटर ने 2020 के इस कोरोना ने भी मौका दे दिया है, हम और आप समझ गए किस तरह से मोबाइल से काम करता है। फ्रॉम ब्रिक्स टू द क्लिक्स। पहले ईंटा के मकान में काम होता था, ऑफिस में नहीं बदला था, अब क्लिक्स पूरी दुनिया की मुट्ठी में है साहब। जमाना बदल चुका है। इन द पोस्ट कोविड era, trying to understand, move, स्वयं, online portals, all are available. In NAP you are being given chance for credit transfer, ABC. अब तो मौका मिल रहा, तो हम आप काम करेंगे, क्यों नहीं ऑनलाइन पोर्टल्स को भी यूज किया जाए। हम मटेरियल डेवलप करेंगे, ई कंटेंट डेवलप करेंगे। I started with A and now competing again A. Area academic, research, extension and finally administration. हम अपने बीकॉम के बच्चे को सिखाएंगे कैसे अच्छा सीखेगा वो सुशासन, सुराज, राम राज्य सीखना पड़ेगा। क्या ऐसे सीखो अच्छा टीचर बनेगा? क्या हमारा विद्यार्थी को अच्छा विद्यार्थी बनेगा? उसे तमाम रोल प्ले करने पड़ते हैं। कभी हेड बनेगा, कभी डीन बनेगा, कभी चीफ क्लार्कर बनेगा, कभी प्रिंसिपल बनेगा, कभी वाइस चांसलर बनेगा। अगर आपकी यह SMS नए के द्वारा A ग्रेड पाया है, टीचरों का बड़ा भारी रोल है, मैं इसका समर्थक हूँ, लेकिन एक बड़ा भारी रोल है शासन का। अगर लीडरों की टीम हो और कप्तान से दिल हो, टीम जीत जाए। और अगर सेवरों की टीम हो और कप्तान लीडर दिल हो, टीम हार जाए। बात को समझो। We need good governance. Therefore, in our BCom syllabi, we have developed a good governance, administration. आपके मती से नाम लेता हूँ। In the cricket, very good player, best player was Sachin Tendulkar. Tendulkar was best player, but he was never best captain. अच्छा खिलाड़ी होना, अपने में सेंचुरी जोड़ लेना, अपना रिकॉर्ड बता देना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ क्या होगा ना, टीम तो हार गई, सेंचुरी बन गया, डबल ट्रिपल सेंचुरी बन गई, और टीम की पराजय हो गई। Think about धोनी, MS धोनी 18-19 ओवर तक हार और 20 ओवर के मैच में 1 ओवर में और अंतिम बार में भी जीत निकालते। ऐसा हमें कप्तान चाहिए, ऐसा हमें प्रशासक चाहिए, ऐसा हमको गुड गवर्नेंस, तब जाके काम होता है। बात सोचना किस तरह से पराजय को विजय में लाया जाएगा, और उसको मैनेजमेंट के लैंग्वेज कहते हैं टर्न अराउंड मैनेजमेंट, कन्वर्टिंग द सिक यूनिट इनटू प्रॉफिटेबल यूनिट। अगर ये काम हो पाएगा तो हमारे देश की संस्थाएं विश्व स्तर पे, और मौका मिला हुआ है। मैं आपको बता दूं 2020 जो आया था वो इतना बुरा आया था, कोरोना आया, कोविड-19 शुरू हुआ हमारे मार्च 2020 में आया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इट वाज जस्ट लाइक थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन आप सीखो, जब जिंदगी में संकट आवे वही सुधारना आपको। Whenever there is crisis in your life, it is a golden opportunity, the opportunity knocking the door. भारत सरकार ने कितने बड़े काम किए। 2020 के कोरोना काल में ही 2 काम बड़े खास हैं। नंबर 1 NEP and नंबर 2 ANPA, आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये दोनों बड़े भारी काम। One is self-reliant education, another is self-reliant economy. भारत सरकार ने तय किया शिक्षा हमारी उपज पे होगी। The shift from, आपको पता होगा हमारे देश शिक्षा को कैसे लाड़ निकालेगा। The shift from लाड़ निकाले to गुरुकुला, फिर से लौटना होगा वही व्यवस्था, गुरुकुल की व्यवस्था। और गुरुकुल का मतलब आपको पता होगा, गु माने होता है अंधेरा, रू मीन्स रोशनी। गुरु वो है जो जीवन के अंधकार को निकाल के रोशनी का संचार। ऐसा गुरु हमको चाहिए जो हमारे जीवन के अंधकार को निकाले और रोशनी का संचार। आपको काशी में बैठी हुई कबीर की धरती है। कबीर ने कहा था साध साध को गई रहे, वो था एक
उसके बाद देखना अच्छा इसका ये गड़बड़ है, ये चिंता लगेगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, आपका एक डीएनए है, लेकिन आज से तय कर लीजिए मनोवृत्ति। डीएनए तो ईश्वर ने दिया है, but friends please try to understand you are having perfect be positive attitude। केवल एक ही मामला तय होगा कि हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक। Now SMS is your alma mater। You will be known as alumnus or alumna of SMS। देखो alma mater की हिंदी होती है मातृ संस्था, ये आपकी माँ है। आपको अधिकार नहीं है SMS की करते ही बुराई कर। किसी भी व्यक्ति को अपनी माँ के बुराई करने का मन ही नहीं है। मदर में कोई बुराई होती है, मदर ही जानते रहता है। Therefore, try to understand whatever positive things are prevailing to SMS, it right. And I bless everyone because probably my age is more than you people. I bless all of you. And Lord Vishwanath is always blessing all of you to attain all the commanding heights in this life. And completing my last point, innovation. Someone was talking about innovation. That in this institution there is much emphasis on innovation. But from my point of view, innovation is different. मेरे हिसाब से innovation का meaning है MAD, make a difference। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छतों तक जाना, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छतों तक जाना, जिनकी मंजिल आसमां हो उन्हें रास्ता स्वयं बना। मैं जब टीचिंग शुरू कर रहा था 86 में तो 2 तरीका चलता था। एक फिर पर्ची लेके जाना, नहीं कोई तो किताबें लेके चली जाती है, मुझे समझ में नहीं आता पर्ची बनाने कितनी मेहनत लग जा रही है, नोट्स को नहीं बनाते। और दूसरा ऐसा पीपी, आई एम नॉट criticizing the slip on the computer, but the slip on the computer will help the teacher। It will never replace the teacher। न तो किताब, न तो पर्ची, न तो कंप्यूटर टीचर का आस्थाना पर। कोरोना काल में हमने देखा ना जो पढ़ाई ऑनलाइन हुई, क्या हालत हुआ। तो मैंने तो साथ यही तय किया, जहाँ बोलना हो घंटा 2 घंटा 4 घंटा 15-20 पॉइंट लिख लिया और मेरा काम। मैं साहब ने पढ़ा के निकला MBA की क्लास में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। मेरे से प्रोवाइडर, प्रोफेसर, हेड, डीन, डायरेक्टर, प्रोवीसी सारे खुशी। वो अकेले वहाँ प्रोफेसर भी थे। उनसे क्लास किया एक साहब बुला रहे, हाजिर किया गया। वो पहली बार वो लाइफ में पढ़ाई के बोले है ना अच्छा है। अब मेरे मुंह से निकल गया सर आज तो आप पढ़ाई कर नहीं, आज तुमने अच्छा पढ़ा कर पता लगाया, लेकिन तुम्हारी जो अंग्रेजी थी वो बड़ी रैपिड है। मैं आपके सामने पब्लिकली एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी आज में वही रैपिड है। Try to understand it. We have to convert our negative point into positive। मैंने उसी दिन तय कर लिया यही मेरा यूएसपी है। इसको कहा है रैपिड एक्स अंग्रेजी, यही मेरा अपना यूएसपी रहेगा, यूनिक सेल्फ प्रोपोजिशन। मैं ऐसा अपनी किताब में कोई बात नहीं लिखता जो खुद को समझ में नहीं आता, खुद आपको समझ में नहीं आता। हम ऐसी कोई चीज बोलते नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आता। मैंने इसी को अपना तरीका बना लिया भाई, मैं समझ। देखो एक्सपर्ट वही है जो कठिन चीजों को सहज बना देगा। एक्सपर्ट इज द पर्सन हु विल मेक द कॉम्प्लेक्स इशू सिंपलेक्स। पता नहीं एक्सपर्ट क्या होता है? ऐसा एक्सपर्ट आते हैं समझ में नहीं आता क्या। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैं तो साहब स्वाट को बना दिया टाउस, SWOT नहीं TOW। कन्वर्ट योर स्वाट इनटू टाउस। मेट्रो कंपनी ने पंखा बनाया, उसका नाम रखा आर्टम, METROORTA। मेट्रो कंपनी ने पंखा का नाम रखा आर्टम फैन। मैंने भी यही काम किया, स्वाट इनटू टाउन। कन्वर्ट योर थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटी एंड वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। आपने इतनी तन्मयता से मुझे सुना, मुझे तो उम्मीद नहीं कि अभी बोलता मैं आज वेलकम था। आपने जो मोहब्बत दिया इसके लिए मैं बहुत ऋणी हूँ। एक अंतिम एग्जाम्पल दे के बात करूँ। अब मैंने अगली बात किया, अब मैं अमिताभ बच्चन साहब की बात करें। अमिताभ बच्चन साहब फर्स्ट जनरेशन के फिल्म इंडस्ट्री में था। उनके पिताजी को मैंने देखा हरिवंश राय बच्चन जी को। He was a great poet, but he was throughout the life a lecturer. He was neither reader nor professor. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो केवल लेक्चरर थे। बड़े आदमी थे, बड़े साहित्यकार थे, लेकिन लेक्चरर थे।
उनके सन ने तय किया आई विल ज्वाइन द फिल्म इंडस्ट्री। ये बहुत मुश्किल काम है, फर्स्ट जनरेशन को एंट्री मिलती नहीं है, और ट्रेन में जाके हमने जॉब को धक्का मारा, बट ही डिसाइडेड टू ज्वाइन द फिल्म इंडस्ट्री। आपको याद होगा ऑल इंडिया रेडियो, द टेस्ट वाज कंडक्टेड, द एक्सपर्ट वाज नोन टू हरिवंश राय बच्चन। ये भी मालूम था एक्सपर्ट कौन है, फिर उनका देखिए तमीज, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा, इफ माय सन इज फाउंड कॉम्पिटेंट द असाइनमेंट्स विल बी गिवन टू हिम। If my son is found competent, the assignments will be given to him. परीक्षा हुई, अमिताभ बच्चन साहब रिजेक्ट किए। कहा गया कि अमिताभ बच्चन की बोल और अमिताभ बच्चन की चाल दोनों ठीक है। उस समय जो लोग रेडियो में काम करते थे वो बहुत मधुर भाषा बोलते थे और देखने में बड़े सुंदर होते। अमिताभ बच्चन में दोनों को कोई नहीं था, बोली भी कुछ बांस वाली और लंबाई भी कैसे तो बांस जैसे। This was a serious weakness in the personality of Mr. Darwin. And Amitabh Bachchan was rejected in that All India Radio test. लेकिन अमिताभ बच्चन ने उसी कमजोरी को बढ़ाया। भूतो न भविष्यति, अब दूसरा अमिताभ बच्चन नहीं मिलता, दूसरा लता मंगेशकर नहीं मिलता। सबके दिलों को कैसे राज किया? उसी बोली से और उसी लंबाई से। Friends, please accept your weaknesses are your strength, but we have to convert the weaknesses into strength. Only then success is yours. I pray Lord Krishna for the success of all my students, students. I am completing by these two lines. चिरागों को महफूज करो, चिरागों को महफूज करो आंखों में, बहुत देर तक रहा। मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, फिर किसी और को मुलाकात करो। So much, sir, for your pearls of wisdom and summing up your teachings under the umbrella of the acronym area, that is academic, research, extension activities and administration, and of course topped with value education. And now it's time to express our respect and gratitude towards our guests. For this, first, I request Director Sir to felicitate the chief guest of today's program, Professor H.K. Singh. Thank you, sir, for your time and efforts. Guest of honor for this session. Kindly felicitate guest of honor, CA Ms. Sudeshna Basu. Thank you, Director Sir, for doing the honors. Finally, the time has come to thank these honored guests for being with us this morning and sharing their precious time. I would now request my colleague, Dr. Veerpata, coordinator Comm Honors Program, to propose a vote of thanks. Thank you, ma'am. So finally, we come to the end of this session. A very good afternoon, esteemed guests, faculty members and dear students. It is my great honor and privilege to
to propose the vote of thanks on behalf of Department of Commerce and Mass Communication, School of Management Sciences, Varanasi, for this wonderful gathering today. First and foremost, with deep gratitude and devotion, I stand here to offer heartfelt thanks to Lord Ganesha, the remover of obstacle, the embodiment of wisdom, and the bestower of success and prosperity. Your presence in our heart and mind has ensured the smooth and successful conduct of today's program, and for that we are eternally grateful. I would like to extend our heartfelt gratitude to our guest of honor, CA, Mrs. Sudeshna Basu ma'am, Chartered Accountant, Varanasi. Ma'am has rightly emphasized on that we all are living in the age of extraordinary changes. The industries are disrupting the technology, or we can say technology has disrupted the entire industry. The world needs quick adaptability, and it is up to the leaders, it is up to the upcoming leaders who has to gear up for the change. So ma'am has rightly said that as you are starting your new journey, you need to be bold. You are not supposed to settle for mediocrity. So accept the challenges, and the leaders of tomorrow are those who are constantly challenging oneself. So ma'am, thanks for your enlightening word and professional wisdom have truly inspired all of us, especially our students who take up to the role models like you as they embark on their professional journey. Next, a special thanks to Sri Dayasankar Misra ji, President Ramnagar Industrial Association, Founder India Inc. Chemical Industry, Varanasi, for his gracious presence. Sir, आपने बहुत अच्छी बात कही कि instead of being a job seeker, one should be a job creator. So sir has rightly emphasized that after completing and particularly this has become the mindset of India. So the sir has rightly said that you need to challenge oneself. You are not supposed to be a job seeker, you need to be a job creator. And immense opportunity is there. The sir has rightly said that 1%, the 1% market we have trapped. If we talk about the Indian export industry, so plenty of market is there which is still untapped. So challenge is all before you. It is up to you to take up the challenge of entrepreneurship and come with the flying colors where not only your parents but the entire institution will feel proud of you. So thank you sir, and you have rightly said that being a student one need to surrender oneself to the learning. अगर आप अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं शिक्षा के प्रति तो आप आने वाले समय में सीख नहीं सकते। तो सबसे पहले आपके अंदर जो गुण होना चाहिए समर्पण का होना चाहिए। सर आपने ये बिल्कुल सही बात कही, और ये केवल स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये टीचर के लिए भी है, और anyone who wants to achieve success in life, he or she needs to surrender itself. Sir, your support and encouragement has added great value to this event, and we are deeply grateful for your time and contribution. Thank you, sir. Next, I would like to express our sincere thanks to our chief guest, Professor H.K. Singh, Head and Dean, Faculty of Commerce, Varanasi Hindu University. Sir was very simple in his approach, and someone has rightly said, the simplicity leads to sophistication. The sir has said there is only two categories. Either you are mismanaged or you are well managed. There is no third category. So it is up to all of us whether which category we want to fall upon. Whether we are the part of mismanaged or well managed. And sir has rightly said the acronym area which stands for Academic Research, Extension Activity and Administration.
The sir has emphasized on building चरित्र, नैतिकता और मूल्यों की बात की। अगर ये सारी चीजें स्टूडेंट के अंदर नहीं है तो ये सर से सीखने लायक है। आपके अंदर चरित्र, नैतिकता और मूल्य को जब तक आप आत्मसात नहीं करेंगे, आप सक्सेस को अचीव नहीं करेंगे। The sir has also emphasized on the soft skill development and holistic development. He has not talked about only the academic development. You need to be he talked about, emphasized about the 360 development, 360-degree development of the student. Then only you taste the real success in life. Sir, your continued guidance and mentorship has always been a driving force for the success of our department and institution. We deeply appreciate your presence and support. Next, I would like to express our profound gratitude to Professor R.K. Singh sir, Head Department of Commerce, School of Management Sciences, Varanasi. Sir, your leadership and valuable insight have greatly enriched today's program and we look forward to your continued support. A heartfelt thanks to Dr. Pallavi Pathak, Professor, School of Management Sciences, Varanasi, Dr. Viresh Tripathi, Associate Professor, School of Management Sciences, Varanasi, for your involvement in today's event are sincerely appreciated. Thank you, ma'am. We are also grateful to Sri Sanjay Gupta ji, Registrar of the Institute, for his administrative support and commitment to the smooth functioning of this institution. Sir, your efforts are greatly appreciated. I am equally thankful for and immensely grateful to Professor P.N. Jha, Director of the Institute, for his constant guidance and encouragement, which has played an integral role in shaping the institution and bright minds we nurture here. Thank you, sir. I would also like to express my gratitude to Dr. M.P. Singh, Executive Secretary of School of Management Sciences, for his leadership and relentless effort in ensuring smooth functioning of our institution. Thank you, sir, for your unwavering support. I would like to thank all the students who are present over here. Your enthusiasm and participation are what makes event like this meaningful and successful. You all are heart and soul of this institution, and we are committed for your achievement and progress. Last but not the least, I am immensely thankful to Mr. Atish Khatse, Course Coordinator, M.Com Program, Dr. Chandrasekhar Singh, Course Coordinator, B.Com Honor, B.Com Program, Dr. Ishan Tripathi, Course Coordinator, B.A. Honors, Mass Comm Program. Once again, thank you all for being a part of this special occasion. We look forward to continue our journey of academic excellence and success together. Thank you and have a wonderful day ahead. Thank you. Thank you, Veer sir, for thanking everyone. This brings us to the end of inaugural session. Your life flies at is a remarkable occasion. I have no doubt you will rise to it. I hope you all have a great learning experience and one of the most memorable period here at SMS. Welcome to the SMS family. And the first orientation session will commence after the lunch. But before dispersing, let us